Hello students. The question is an AC source of EMF Vt equals to V0 sin omega t is put across a pure capacitor. The value of angular frequency of the instantaneous power is option 1 0, option 2 omega, option 3 2 omega and option 4 omega by 2. So the problem is based on the topic alternating current, and in this problem there is a capacitor, pure capacitor. Now pure capacitor means it is having no internal resistance, no resistance effect is in this capacitor. In practical there are some resistive effect in the capacitors as well as inductor, but here the capacitor is pure. It means that it is not having any resistive effect. So it is energized by a voltage source, by an EMF of this value. Vt is equal to V0 sin omega t. And we have to find out the angular frequency, the value of the angular frequency of the instantaneous power. So we have to calculate the instantaneous power first. So power is basically the product of voltage and current, particularly the instantaneous value of the voltage as well as the instantaneous value of current. Now we know that in a capacitor the current leads the voltage by 90 degree. So it means that if this is the expression for voltage, then the current expression is something like this: it equals to some peak value of current multiplied by sine omega t plus phi, or plus 90 degree, because the phase difference is 90 degree between current and voltage, and current leads the voltage. So this comes out to be I naught cos omega t. So this is the expression for the current. This is the current expression. Now putting these values, this expression and this expression here in equation 1, so we get V naught sine omega t multiplied by I naught cos omega t. Now taking V naught and I naught in the front place and sine omega t cos omega t separately. Now dividing it by 2 and multiplying it by 2. The reason is we know that 2 sine omega t cos omega t is the formula for sine 2 omega t. Sine 2 omega t. So in place of this we put sine 2 omega t, and the magnitude is V naught I naught upon 2. Now we have to focus this particular term, and here this 2 omega. The coefficient of this t is 2 omega, and the coefficient of t denotes the angular frequency. So the angular frequency of the power, of the instantaneous power, is 2 omega. So option 3 is correct here. तो एक प्रॉब्लम पूछी गई है, इसमें कहा गया है एक एसी सोर्स है जिसका ईएमएफ दे रखा है Vt इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t. इसको एक कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर के अक्रॉस जो है प्लेस किया गया है. हमसे पूछा गया है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी इंस्टेंटेनियस पावर की. तो हम जानते हैं पावर इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज. करंट एंड वोल्टेज का प्रोडक्ट होता है. और कैपेसिटर सर्किट में, प्योर कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो करंट लीड करती है वोल्टेज से 90 डिग्री. तो हम करंट के लिए जो एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री. साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री होता है कॉस ओमेगा टी, तो इसकी जगह हम कॉस ओमेगा टी रख देंगे. तो आई नॉट कॉस ओमेगा टी यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाएगा करंट का. तो पावर अगर हम निकालें तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे हम, वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई नॉट कॉस ओमेगा टी. यहाँ पे हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक फॉर्मूला बन जाए साइन 2 ओमेगा टी का, क्योंकि हम एक सिंगल टर्म की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं. फिर हम जनरलाइज एक्सप्रेशन से इसको कंपेयर कर सकते हैं. जनरलाइज एक्सप्रेशन की हम बात करें तो हम कह सकते हैं दैट इंस्टेंटेनियस पावर बराबर होगी सम पीक वैल्यू ऑफ पावर इनटू साइन एंड सम रेफरेंस ओमेगा टी. सो दिस रेफरेंस हियर इज 2 ओमेगा. यहाँ पे ओमेगा के प्लेस पे 2 ओमेगा आ रहा है, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 2 ओमेगा आ रही है. तो इस तरह से हम देखते हैं ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. This is the angular frequency 2 omega of the instantaneous power. So hope you understand the explanation. Thank you.